मोनोसैक्राइड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं फ्रॉम सत्यानारायणा। मोनोसैक्राइड से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनमें पहला वर्ड जो हमको समझना है वो है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। देखें, इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ मोनोसैक्राइड्स। देयरफॉर अब बहुत सारी डेफिनेशंस आगे आएंगी जो आपको समझनी है बिकॉज ये एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछते हैं। सो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी शुड बी वेरी वेरी क्लियर। फर्स्ट वन ऑफ देम इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमर्स बेसिकली वो कंपाउंड होते हैं, दे हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अब मतलब दे कैन बी अ मॉलिक्यूल जिसको अगर आप देखें तो वो नजर आएगा C6H12O6, बट ये मॉलिक्यूल एक बिल्कुल डिफरेंट केमिकल कंपाउंड हो सकता है सच एज ग्लूकोज, या फिर ये एक और बिल्कुल डिफरेंट केमिकल कंपाउंड हो सकता है, बट द फॉर्मूला इफ यू लुक एट इट विल बी C6H12O6. सो एनी कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट उनकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। अगर उनके फंक्शनल ग्रुप्स और अटैच्ड एटम्स इस तरह से अरेंज्ड है कि उनकी लाइट पोलराइजेशन properties, special properties अलग हैं, so such compounds are called stereoisomer. Isomer इसलिए क्योंकि उनका structural formula same है. A carbon is said to be, अब ये एक और terminology throw कर रहे हैं, asymmetric carbon. A carbon is said to be asymmetric when it is attached to 4 different atoms or groups. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स हम ये बता सकते हैं कि किसी भी मोनोसैक्राइड के कितने आइसोमर्स होंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द फार्मूला फॉर ग्लूकोज, सो हियर वी हैव द फार्मूला फॉर ग्लूकोज व्हिच इज शॉर्ट फॉर्म में आपको पता है कि इट्स रिटन एज C6H12 and O6. So let's see if there are 6 carbons. Yes, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. लेकिन अगर मैं कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? कार्बन की वैलेंसी होती है 4. ठीक है, यानी अगर चारों तरफ कार्बन अलग अलग एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन. तो अब देखते हैं यहाँ ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन है. देखो इस कार्बन को देखो, ये वाला जो कार्बन है ये एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरी तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक तरफ इसकी दोनों वैलेंसीज ऑक्सीजन ही के साथ जुड़ी हुई हैं. सो ये तो एसिमेट्रिक नहीं है बिकॉज एसिमेट्रिक कार्बन मैंने आपको बताया ना वो कार्बन होता कि जिसकी सारी वैलेंसीज, ये वाली एक अलग चीज से लगी होती, ये वाली एक अलग चीज से, ये वाली एक अलग एटम से और ये एक अलग एटम से. लेकिन अभी जो हम सिनेरियो देख रहे हैं इस कार्बन को, उसमें ये तो है ही नहीं और 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हैं. सो दिस इज नॉट एन एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन में चारों वैलेंसीज अलग अलग एटम के साथ फुलफिल होनी चाहिए थी. अब इस कार्बन को जरा देखिए, एक तरफ ये लगा है कार्बन से तो मतलब एक सेपरेट बॉन्ड बना हुआ है ना, दूसरी तरफ ये लगा हुआ कार्बन से एक और सेपरेट बॉन्ड बना हुआ है. एक ही साथ तो दोनों कार्बन नहीं है ना, दोनों अलग. अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है तो ये तो एक ही जैसा नहीं. एक जैसा बॉन्ड मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अलग अलग बॉन्ड. यहाँ एक अलग बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ एक अलग बॉन्ड बना हुआ है, ये तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है और चौथा बॉन्ड OH ग्रुप के साथ बना है. तो ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन के लिए क्वालिफाई करता है बिकॉज इसके चारों तरफ अलग बॉन्ड्स हैं. इसी तरह ये कार्बन अलग बॉन्ड अलग बॉन्ड अलग बॉन्ड अलग बॉन्ड, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है. ये बॉन्ड यस, ये कार्बन भी अलग बॉन्ड अलग बॉन्ड अलग बॉन्ड, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन है. तो ये चारों कार्बन्स जो यहाँ सेंटर में पड़ रहे हैं, दीज आर ऑल asymmetric carbons basically. Okay, so if we go back to the description of the text here, the number of asymmetric carbon basically determine the possible number of isomers by the formula 2n. So for example glucose अभी जो हमने देखा, it contains 4 asymmetric carbon atoms, इसीलिए 4 पावर पे आ जाएगा, n is equal to 4. So 2 power 4 would be 2 into 2 into 2 into 2. This is what we mean by 2 power 4. Okay, 4 क्यों? क्योंकि asymmetric carbon 4 हैं. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So there are 16 possible isomers for glucose. You getting? So stereoisomerism and asymmetric carbon, very important. Now glyceraldehyde is the simplest monosaccharide. It is composed of 3 carbons only. It is the reference carbohydrate, simplest carbohydrate. Even glucose से भी simple है. Glucose में भी 6 कार्बन होते हैं, but glyceraldehyde में there are only 3. It's a triose. और इसमें सिर्फ एक asymmetric carbon है. There's only one asymmetric carbon there. Okay, so if you look at the structural formula for glyceraldehyde, for example, so that's the only asymmetric carbon. तो इसीलिए इसका कोई isomer possible ही नहीं है. That's the only one.
Okay, so it exists as two stereoisomers and well actually एक possible होगा ना यार, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनेगा 2 times n. n का मतलब है number of asymmetric carbon, तो इस केस में 2 times 1, तो 2. 2 is the answer. So there will be 2 isomers, okay? Only 2 isomers. So simplest जो carbohydrate या simplest monosaccharide है, उसके सिर्फ 2 isomers possible है. Okay, it's the reference, it's the simplest carbohydrate we know, right? Now, what are D and L isomers? ये term बहुत ज़्यादा use होगा पूरी biochemistry में. The D and L isomers are mirror images of each others. The spatial orientation of hydrogen and OH groups on the carbon atom that is adjacent to the terminal primary alcohol carbon determines whether the sugar is going to be D or L. So, अब दोबारा इस line को ना ज़रा गौर से सुन लें कि hydrogen और OH की arrangement on the carbon, which carbon? Carbon number 5 basically for glucose, which is adjacent to the terminal primary alcohol carbon. So if you look at the structure of glucose, where is the terminal alcohol carbon? This is the terminal alcohol carbon. और इससे बिल्कुल पहले वाला जो carbon है glucose के केस में, this is carbon number 5. यहाँ पर OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करती है कि वो L है या H है D है. And what does this basically mean? If the OH group on carbon number 5 is on the right side, the sugar is known as the D series sugar. So if you look here, this is a D series sugar because the OH group is on the right side, and if it's on the left side, it's L series, L for left. अब आप कहेंगे R क्यों नहीं है यहाँ पे? Well, that's a good question. So D series and L series is based on the arrangement of the OH group on the second last carbon, which is next to the alcohol carbon, which is terminal carbon. The structure of D and L glucose based on reference monosaccharides, D and L glyceraldehyde. So मैंने आपको बताया था this is the basic one. इसी से सारे carbons की definitions निकली हैं basically. It may be noted that naturally occurring monosaccharides in the mammalian tissue are mostly D configuration. That's an important point. So most of the OH groups are on the second last carbon. They are basically on the right side. The enzyme machinery of cell is specific to metabolize D series of monosaccharides, and that's why we have most of them. Okay, what is the optical activity of sugar? That is basically कि अगर आपके पास sugar का कोई solution है, इसमें बहुत सारा sugar है, and you pass a beam of light from there. So based on कि जो obviously एक organic compound है ना, so it will try to bend the light. So depending on how it is bending the light, it is rotating the light. The sugars are called levorotatory or dextrorotatory. So optical activity is a characteristic feature of compounds with asymmetric carbons, such as अभी जो हम पढ़ रहे थे, ग्लूकोज में asymmetric carbon है, glyceraldehyde में asymmetric carbon है. So when a beam of light, polarized light, is passed through a solution of an optical isomer, it will be rotated either to the right or to the left. The term dextro or levorotatory are used when the light is rotated to the right side, dextrorotatory, and to the left side, levorotatory. So वो sugar compounds जो light को right side पे rotate करेंगे, they will be known as dextrorotatory compounds. Okay, and based on this configuration, they can basically be dextrorotatory positive or dextronegative, levorotatory positive or levonegative. Okay, I'm just giving you the flavor, you should basically know. अच्छा, बाज़ compounds ऐसे होते हैं जिनमें D और L isomers equal concentration में होते हैं. ऐसे solution को हम नाम देते हैं racemic mixture. अब इसमें suppose you have a solution, उसमें equal number of D isomers हैं और equal number of L isomers हैं, तो light जो है वो right side पे rotate होगी, left side पे rotate होगी, और overall effect ये होगा कि light rotate नहीं होगी. There will be no optical activity. Overall optical activity will be zero. Okay. In the medical practice, ये word जो हम use करते हैं, ये ड्रिप्स में लगाते हैं, डेक्सट्रोज, इट इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज इन सॉल्यूशन. सो ग्लूकोज का सॉल्यूशन कहलाता है डेक्सट्रोज. ये सिंपल आपको एक वर्ड पता होना चाहिए. ओके, और रीजन उसका ये कि इट्स बेसिकली डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो इसलिए डेक्सट्रोज इसका नाम है. वेरी इंपॉर्टेंट. Now, so आपको अगर पता है किसी पेशेंट को ड्रिप लग रही है डेक्सट्रोज की, so you should know कि we are talking about glucose. फिर इसकी different percentages होती हैं. There is, for example, a 5% dextrose solution. There is a 25% dextrose solution. So that basically means the amount of glucose in the solution. Okay. Now the configuration of D-aldoses, what does that mean? The configuration of possible D-aldoses starting from D-glyceraldehyde is depicted in figure 2.2. अभी हम देख लेते हैं figure 2.2. Different configurations. These are all aldoses because they all have aldehyde group. You see there? All have aldehyde group. So these are all aldoses. So basically reference carbon आपका क्या है?
glyceraldehyde जिसमें 3 कार्बन है. If one more carbon group is added, it's aldotetrose 4 carbon, then aldopentose 5 carbon, and then there are aldohexoses of different configuration. They can be D-allose, D-altrose, D-glucose, D-mannose, depending upon how the functional groups are basically arranged. You don't have to remember all of them, but you just need to have an idea of what we are talking about. Okay, so this is a representation of Kiliani-Fisher synthesis by increasing the chain length of an aldose by 1 carbon at a time. Therefore, we start with trioses, then 2 tetroses, then pentoses, then hexoses. Of the 8 aldohexoses, glucose and mannose and galactose are the most familiar. Among these, D-glucose is the only aldose monosaccharide that predominantly occurs in nature. So D-glucose is the one जो हमारी body में भी हम metabolize कर रहे होते हैं, plants में भी synthesize हो रहा होता है. But you should have an idea that there are so many different categories of monosaccharides. Okay, these are all monosaccharides, by the way. So configuration of D-ketoses is starting from dihydroxoacetone, which is a keto group, and then a triose. ये मैंने आपको अपने initial introductory lecture में बताया था कि how to classify carbohydrates. They are either ketoses or aldoses. Okay. Now, starting from the simplest ketose, there are 5 keto sugars which are physiologically important, and their structures are given in figure 2.3. So let's have a look at figure 2.3 so that you know all of them. These are all ketoses. So the 3 carbon ketose is dihydroxyacetone. So you see there's a keto group and 3 carbons. Then 1, 2, 3, 4, 5 carbons. So D-xylose, that's also a keto group. Then D-ribulose. Then D-fructose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. So see, this is a keto hexose, D-fructose, dextrorotatory. Okay, now you know all the terminologies. D-pseudoheptulose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and there is a keto group, so that's a ketoheptose. Okay, so these are all important physiologically. हम इनके बारे में कहीं ना कहीं पूरे बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. You should know. देखें जब वर्ड आए ना कि D-mannose, so you should be able to tell we are talking about a mannose group which is dextrorotatory. Okay. So you should be able to understand the terminologies. Then there is a term called epimer. If 2 monosaccharides, so if I have one monosaccharide here and the other monosaccharide here, and they differ from each other only on a single carbon compound, for example glucose और galactose का अगर structure देखें तो वो सिर्फ carbon number 4 पे differ करते हैं. So they are called epimer of each other, and carbon 4 epimer to be very specific. Okay, so if you look at the structure, for example, of a glucose, so let me find the relevant figure. So here we have a glucose and here we have a galactose. So it's only carbon number 4 where there is arrangement differences. So these 2 compounds are called carbon number 4 epimer of each other. So if they differ only at one carbon compound, they are called epimer. देखें ये सारे terms आप जमा करते जा रहे हैं. So we discussed कि what do we basically mean by stereoisomerism, then asymmetric carbons. Then we started talking about what is a racemic mixture, what is DNL isomer, dextrorotatory, levorotatory, and now we are going towards another terminology called enantiomers. Enantiomers are a special type of stereoisomers that are mirror images of each other. The 2 members are designated as D and L sugars. Enantiomers of glucose are depicted in figure 2.5. So let's have a look at figure 2.5 so that we understand what do we mean by enantiomers. So look at these. They are exactly mirror images of each other. You see here OH group on carbon number 2. यहाँ से start करें. Keto group जो है इस तरफ लेफ्ट साइड पे है, therefore it's an L glucose. यहाँ पे राइट साइड पे है, this is a D glucose. So OH on the left side, OH on the right side, OH on the right side, OH on the left side, OH on the left side, OH on the right side. Exact mirror images. इनका फॉर्मूला एक ही होगा. देखें C6H12O6 दोनों का फॉर्मूला ये होगा, but one is levorotatory, the other one is dextrorotatory. They are called enantiomers of each other. So that is the definition of word enantiomer. Okay, they are mirror images of each other. Now the term diastereomers is used to represent stereoisomers that are not mirror images of one another. So we may have some instances जिसमें there will be 2 compounds. Say for example one compound also with the formula C6H12 and O6, another compound also with the formula C6H12O6, but वो mirror images नहीं है.
उनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि एक आध ग्रुप, फॉर एग्जांपल दोबारा अगर हम उस डायग्राम पे चलते हैं, सो वेयर वाज द डायग्राम वेयर आई showed you the enantiomers there. So for example suppose same scenario है, लेकिन ये OH जो है ये भी इधर लेफ्ट साइड पे है, तो अब ये मिरर इमेजेस नहीं है ना, यहाँ पे भी OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे, बाकी का स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स का, लेकिन ये वाला जो कार्बन है कार्बन नंबर 3 उसमें दे हैव द सेम अरेंजमेंट. सो इन दैट केस दे विल बी नोन एज Diastereomers. Okay, they are not the enantiomer. For enantiomer they have to be exact mirror image of each other. ओके, सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी. अब हम डाइव इन करते हैं, लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब फर्दर स्ट्रक्चर वाइज बहुत सारी ज़ाहिर डिफिकल्ट, और मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इट्स गोइंग टू बी एन ईजी डिस्कशन, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ डिस्कशन जो कि काफ़ी ड्राई भी होगा, डिफिकल्ट भी होगा, बट पॉइंट ये है कि आई ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू एंड आई ट्राई टू हाईलाइट द एरियाज जो आपके लिए क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट करने लगे, सो यू शुड एक्चुअली यू नो फ्रॉम द वेरी आउटसाइड should be very clear on कि glucose has like these 6 carbons 1 2 3 4 5 and 6. At one end there is obviously an aldehyde group, so you see that CHO group. On the other hand there is an alcoholic group. अब ये information आपके लिए important है. देखें, obviously there is no point ratifying the structures के double bond single bond, एक चीज़ याद कर लें आप, obviously याद होना चाहिए, that's a good thing, but मैं जो points highlight कर रहा हूँ ना, देखें वो important है. एक एंड पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कुछ ना कुछ रिएक्शंस करेगा. तो जब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इस तरह के तमाम रिएक्शंस की, तब ये बात हो रही होगी कि द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1, सो दैट्स कार्बन नंबर 1 बेसिकली, और द अल्कोहलिक ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 6, सो दीज आर द ग्रुप्स व्हिच विल बी वेरी वेरी रिएक्टिव. ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किस तरह से जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जो कार्बन नंबर 6 है वहाँ अल्कोहलिक ग्रुप है, and then the intervening carbon, each one of them has an OH in special configuration. Okay, so that's the structure of glucose. अब यहाँ जो बात हो रही है formation of hemiacetals and hemiketals, that's an important part of the discussion, because होता ये है कि ये जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्कोहल और एल्डिहाइड, they have a tendency to react in a special manner. So for example, सुने आप जरा, the hydroxyl group of monosaccharide, अभी मैंने आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाया था ना, एक एंड पर कार्बन नंबर 6 पे था, it can react with its own aldehyde group. तो ये जो अभी हमने डायग्राम देखी थी, if you go back to the same diagram, कहाँ थी भाई, ये वाली, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं. So the aldehyde group and the alcohol group, they can interact with each other within the same compound. So the hydroxyl group can interact with the aldehyde group. So here we are talking about carbon number 6, here we are talking about carbon number 1, or the keto functional group. I mean, for that matter, अभी तो हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे तो aldehyde group था, but there are keto sugars as well. और जब ये रिएक्शन होगा यानी कार्बन 1 और 6 के दरमियान, तो हेमी एसिटल बनेगा और हेमी कीटल. अगर कीटो ग्रुप का इंटरेक्शन है, if we are talking about keto sugars, then it will be hemiketal formation, और अगर aldehyde है तो hemiacetal formation. Thus, the aldehyde group of glucose at carbon number 1 reacts with the alcohol group at carbon number 5, which is at the other end. So, if you go back to the same diagram again, कहाँ है भाई हमारी glucose वाली diagram जो कि बार बार मुझे देखनी है? So that particular diagram, okay? So not this alcohol group, actually this alcohol group which reacts with the aldehyde group. So carbon number 5 वाला, okay? The second last carbon basically. So ये जो reaction है यहाँ से hemiacetal, hemiketal ये compounds बनेंगे, okay? And it can form two types of cyclical compound. Obviously एक cycle बन जाएगा ना, ये पूरा जो reaction होगा इस रिएक्शन के नतीजे में so ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, it will no more be like this, it will be, now if this carbon is reacting with this particular carbon, then as a result of this there will be a cyclical compound जो कि hemi acetal या hemiketal कहलाएगा, depending upon कि एल्डिहाइड में रिएक्शन हुआ है या रिएक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ कीटोन ग्रुप. ओके, बिकॉज दो तरह के शुगर्स हैं, आपको पता है, एल्डिहाइड शुगर्स हैं और कीटो शुगर्स हैं. अच्छा, अब जो बहुत सारे वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे, दीज आर नॉट ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम, सो बहुत हाई यील्ड चीज नहीं है, बट एनीवेज यू शुड हैव एन आइडिया कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो पायरेनोज एंड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स क्या चीज है. ये जो अभी हमने बात की कि ग्लूकोज, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यहाँ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान जो ये साइक्लिकल इंटरेक्शन हुआ है, इससे वी हैव
different variants of glucose formed now, जिसको हम hemi-acetal कह रहे हैं क्योंकि ये aldehyde group है, so these are hemi-acetals. और ये जो hemi-acetals हैं ये दो तरह के हैं, alpha hemi-acetal of glucose and beta hemi-acetal of glucose, depending upon के orientation of the hydroxyl the aldehydic group in terms of the terminal OH group क्या है. So either they are alpha or they are beta. We'll talk about them in a minute. Now this can be represented either in the linear form, which is what we call the fissure projection, scientist का नाम है, or in the cyclical form, which is what we call the Haworth projection. But you don't need to worry about this. ये exam में पूछते नहीं है यार, tension नहीं लो. So Haworth projection is the cyclical projection basically सिर्फ, ठीक है? और उस basis पर जो cyclical structure बनता है, जो 6-membered ring अभी हम नीचे देख रहे थे, that is Pyranose. और अगर 5-member ring है तो that is known as furanose. So I think this is enough for you to remember कि Pyranose और furanose में major difference carbon number आपको पता होने चाहिए, which one is 6 carbon, which one is 5 carbon. Okay, then what are anomers? देखो alpha and beta cyclic forms of glucose are known as anomers. अभी जो हमने hemiacetals बनाए थे दो तरह के, मैंने आपसे कहा alpha hemiacetal बनता है और beta hemiacetal बनता है. They differ from each other in the configuration only around carbon number 1. And carbon number 1 in this case is known as the anomeric carbon. So if you look back again at this particular diagram, जहाँ बन रहे थे ये, so this carbon is known as the anomeric carbon, क्योंकि इस कार्बन के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है फंक्शनल ग्रुप की, इससे डिसाइड होगा कि ये अल्फा एनोमर है या बीटा एनोमर है. तो दो तरह के यहाँ पे कंपाउंड, देखो कई सारे नाम ऐड होते जा रहे हैं. एनांटियोमर हमने समझा, अब एनोमर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, तो carbon number 1 is known as the anomeric carbon, or it is also called the hemiacetal carbon. In case of alpha anomer, the OH group held by the anomeric carbon is on the opposite side of the group CH2OH. So where is the group CH2OH? So this is the last carbon, CH2OH. इसके opposite side, so this is the CH2OH. इसके opposite side पर ये anomeric carbon की हम बात कर रहे हैं. So the anomeric carbon पे जो aldehyde group होगा, that is purely on the opposite side, ठीक है. The OH group, aldehyde का जो OH part है, because aldehyde is CHO, okay. So इसका जो OH part है, that is on the opposite side of the CH2OH group. So ये यहाँ पर है तो ये इसके opposite है. जबकि आप इसको देखें तो ये रहा CH2OH group और इसी की तरफ मौजूद है OH group. So if the configuration is like this is known as beta anomer, or this is on the opposite side, this is known as alpha anomer. So ये anomers का concept आपको पता होना चाहिए. Then what is mutarotation? The alpha and beta anomers of glucose have different optical rotation, so they turn the light differently. That's all that you have to remember. All this not relevant. You don't have to worry about this discussion, okay? Now the next discussion, which is important, is all this is then nobody asks in exam these degrees and equilibrium mixture and all these things. So you don't really have to worry about it, okay? But important is to understand the definition of anomers. के anomers हैं क्या? Mutarotation of fructose is also a compound which exhibit mutarotation, again depending upon the anomers, okay? So rest of the discussion you don't really have to remember. Now that's something which is important. Reactions. यहाँ हम बात करने हैं, कुछ reactions तो बहुत ही important है. Some of the reactions such as oxidation, reduction, they have a special value and we'll talk about them when we come to them. So the first reaction that we have to discuss is tautomerization or enolization. Is the process of shifting, listen carefully, it is the process of shifting a hydrogen atom from one carbon atom to another, and as a result we produce indiols, okay, and that process is known as tautomerization. So basically what you're doing is that you are shifting hydrogen from one carbon to the other carbon. That's what is happening, okay. Now sugars possessing anomeric carbons, अब आपको ये तब समझ में आएगा जब आपको पिछला discussion पता है कि what are anomers. They undergo tautomerization in alkaline solutions. When glucose is kept in alkaline solution for several hours, it undergoes isomerization to form D-fructose and D-mannose because hydrogen ion की shifting होती है, and this reaction is known as the laboratory diarrhea. You don't have to worry about it, just don't worry, okay. And the resultant compound is known as the enediol. Enediol is a compound which you get if you get glucose into, you see what's happening here. If you study these structures very deeply, so hydrogens are being shifted, and the shift of hydrogen is what we call, so for example here if you look, this carbon number 2 has this hydrogen which is now missing here. There is no hydrogen here. Instead, there is a double bond between carbon and carbon. So the hydrogen has been shifted. A different compound called enediol. Okay. So simple
simple stuff जो याद रखने वाली बात है कि sugars can move hydrogen around, and this process is called tautomerization. And these indiols which are produced, they are highly reactive, okay? Therefore, sugars in alkaline solution are very powerful reducing agents. That's what their property is. They are reducing agents. The sugars are classified as reducing or non-reducing agents. So that's a very strong property of sugar, and the basis of this, they are either known as strong reducers or non-reducing sugars. The reducing property is attributed to the aldehyde or the keto group. Now you know कि तमाम जो भी sugar molecules हैं, they contain aldehyde group, they contain keto group, either aldehyde or keto groups, okay? And these are the ones which are responsible for the reducing property. In the laboratory, many tests are employed to identify the reducing actions of the sugar, such as the Benedict test, Felling test, Barefoot. ये हम अपने किसी ज़माने में करते भी थे यार, इंटर में टेस्ट अब बहरहाल नहीं किए जाते reducing property of the sugar को चेक करने के लिए. The indiol forms or sugar reduce cupric ion of copper sulfate to cuprous ion, which forms a yellow precipitate. Well, don't have to worry about these precipitate and the laboratory reactions. Just remember, sugars are strong reducing agents. Okay, it may be noted that reducing property of sugars cannot help for a specific identification of any one sugar. It is a general reaction. So they reduce something or reaction basically color change होता है यार. आप अगर test tube के अंदर so in the test tube, if you have sugars in there and you add different solutions such as copper sulfate, ये so yellow से उसका जो है ना different color change हो जाएगा and this sort of thing, and you can tell, oh my god, in this test tube there was sugar, but that's now Stone Age. अभी हम करते भी नहीं है. Now we have much better techniques, okay? Oxidation. Depending on the oxidizing agent, the terminal aldehyde or the keto group and the terminal alcohol both can be oxidized. Now that's very important because देखें glucose का structure आपने दिमाग में रखना है हर वक्त. So where is glucose? Let me take you back to the glucose. So this is the glucose structure. और मैं आपको बता रहा था कि glucose के structure में जो important चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि एक end पे aldehyde मौजूद है, दूसरे end पे OH group मौजूद है. Now both of them can be oxidized. और जब ये ऑक्सीडाइज होंगे, अगर कार्बन नंबर 1 ऑक्सीडाइज होता है यानी एल्डिहाइड ग्रुप तो एक अलग चीज बनेगी, और अगर OH ग्रुप यानी कार्बन नंबर 6 ऑक्सीडाइज होता है तो एक अलग चीज बनेगी, और वो आपको लाजमी याद रखनी है बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. सो इफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इट फॉर्म्स ग्लूकोनिक एसिड, बट इफ द OH ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड इट प्रोड्यूसेस ग्लूकुरोनिक एसिड. इन बोथ केसेस अल्टीमेटली जब ऑक्सीडेशन होता है देन यू प्रोड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो अगर एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है यू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक acid, or agar alcohol bhi oxidize ho raha, you at the end produce carboxylic acid, but the names of the carboxylic acids are different. So if CHO group at one end, carbon number 1 is oxidized, you produce gluconic acid. और दूसरे extreme पर अगर carbon number 6 oxidize हो रहा है जिसके पास actually OH group था, so this is now being converted into glucuronic acid. So very important, liver में ये reactions होते हैं for conjugation and gluconic and glucuronic acids are produced. So you should know कि कौन से end पे oxidation का process हो रहा है. Then reduction. When treated with reducing agents such as sodium amalgam, the aldehyde or the keto group of the monosaccharides are reduced to corresponding alcohol. Now these are all important information which you have to remember कि अगर ग्लूकोज की या मोनोसैकेराइड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो द एंड प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इनकी रिडक्शन होती है देन द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल. ओके, और इनके फिर नाम ऐसे, अगर ग्लूकोज रिड्यूस होगा इट विल प्रोड्यूस सॉर्बिटॉल, गैलेक्टोज रिड्यूस होगा तो अल्कोहल जो बनेगा उसका नाम है डिल्सिटॉल, मैनोज से मैनिटॉल, ये नाम सुना भी होगा आपने, फ्रक्टोज से मैनिटॉल प्लस सॉर्बिटॉल बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द मोनोसैकेराइड्स, राइबोज से राइबिटॉल. पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस सॉर्बिटॉल और डिल्सिटॉल की है बिकॉज ये जिस भी सेल में बनेंगे उस सेल में दे विल हैव एन ऑस्मोटिक इफेक्ट और बहुत सारा लिक्विड उसके अंदर आ सकता है. सो दीज आर particularly important for swelling of cells and cataract जैसी condition या nephropathy जैसी conditions में they're important because there is high glucose in the body, there is high sorbitol produced in the lens, and because of the osmotic effect cataracts and lens damage happens. Okay, now these monosaccharides can also be a target of dehydration, and when they are dehydrated simply इसका मतलब ये है कि इसमें से water निकाल लिया जाता है, and when the water molecules are removed, basically 3 water molecules are removed whenever they are treated with a strong dehydrating agent such as sulfuric acid. It's a very strong dehydrating agent. If you look at the reaction here, so where is the reaction? Let me find for you. So किधर गया है?
This one? Yeah. So if from glucose you remove 3 water in the presence of sulfuric acid, that's the structure you get. So water molecules nikal gaye, so there is a cyclical reaction between carbon 2 and carbon 5, resulting in a furfural form. Furfura, naam interesting hai yaar, mushkil bhi hai वैसे. But anyways, the basic concept is when you dehydrate, it converts into a ring structure, and the hexoses given the hydroxymethyl furfural, while pentoses give furfural on dehydration. I would say अगर नहीं भी याद रहता है तो सही है, टेंशन ना लो. ये the chemical basis for the popular Molish test is the production of the colored compound जो naphthol से use होता है. So जो furfurals हैं, they can condense with the naphthol to produce color products. Molish test में हम यही करते थे लैब में. अब बहरहाल I don't know कहाँ ये use होता है. Bial's test, pentoses react with a strong HCl to form furfural derivative, which in turn react with the arsenol to produce green colored complexes, is what Bial's test is, but again outdated. Mucic acid test, galactose when treated with nitric acid form insoluble mucic crystals. Again, I don't recommend remembering these tests, okay? पढ़ इसलिए रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको पता हो गया यार ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका क्या पर्पस है, बट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. Now, Osazone formation, एक और फैंसी चीज, what is Osazone? Now, phenylhydrazine in acetic acid, when boiled with reducing sugars, form Osazone. That's simple. It's basically carbohydrate reaction with phenylhydrazine, जो कि एसिडिक एसिड में होता है. ओके, तो जो कंपाउंड हमारे पास बनता है, that's known as Osazone. As is evident from the reaction, the first 2 carbons, carbon 1 and carbon 2, are involved in Osazone formation. Not important information, guys. Don't worry about them. Okay. Now, formation of esters. Alcoholic groups of the monosaccharide, जो कि एक तरफ अगर ग्लूकोज की बात करूं तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो दूसरी तरफ अल्कोहलिक ग्रुप था. This alcoholic group can be esterified by non-enzymatic or enzymatic reaction. Esterification of carbohydrate with phosphoric acid, for example, is a common reaction in metabolism, happens all the time in your cells. Glucose 6-phosphate and glucose 1-phosphate are good examples. So that's esterification. ATP donates the phosphate moiety in the ester formation. Obviously ये जो additional phosphate है वो ATP से आएगा. Okay, so ये reactions important थे यार. इसमें particularly oxidation, reduction, ये reactions आपको पता होने चाहिए कि what's the basic sense out of it. और जब अल्कोहल, मतलब आपको ये तो definitely पता होना चाहिए अगर इस पूरे में कुछ चीज समझ नहीं की है कि जब oxidation होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जब reduction होता है तो अल्कोहल बनता है, और ग्लूकोज से बनने वाले अल्कोहल का नाम और हर एक से बनने वाले अल्कोहल का नाम आपको पता होना चाहिए. Right? Now what are glycosides? ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं है, ये ग्लाइकोसाइड है. दे आर फॉर्म्ड व्हेन हेमीएसिटल मतलब वो जो रिंग वाला स्ट्रक्चर याद है, कार्बन नंबर 1 ने रिएक्ट किया था कार्बन नंबर 5 के साथ, और द हेमीकीटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप of a carbohydrate reacts with the hydroxyl group of another carbohydrate or even a non-carbohydrate, then the glycosides are produced. So basically glycoside जो हैं ये हेमीएसिटल और हेमीकीटल के मल्टीपल बॉन्ड्स जब दूसरी चीज़ों के साथ बनते हैं, अब वो दूसरी चीज़ें खुद कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती हैं, तो वो जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइड, और जो बॉन्ड उनके दरमियान बनता है दैट इज नॉन एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है. एंड द नॉन कार्बोहाइड्रेट मोबिलिटी इज रेफर टू एज द, अगर एक कार्बोहाइड्रेट है वो कंबाइन हो रहा है दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ तब तो ठीक हो गया, लेकिन अगर दूसरी चीज नॉन कार्बोहाइड्रेट है तो इस नॉन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को नाम देते हैं ए ग्लाइकॉन. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं और वो इंपॉर्टेंट है ना कि क्या क्या ग्लाइकोसाइड्स आपको पता होने चाहिए. Now, उससे पहले द मोनोसैक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ये बात हो गई हमारी. तो रिजल्ट डाइसैक्राइड, अगर एक मोनोसैक्राइड एक और मोनोसैक्राइड से मिला है बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस कंपाउंड इज नोन एज अ डाइसैक्राइड. इफ इट इज मोर देन 2 to 9 फॉर एग्जांपल ओलिगोसैक्राइड्स, मोर देन 10 पॉलीसैक्राइड्स. और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को किस तरह से नोमेनक्लेचर क्या है? द नोमेनक्लेचर ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज बेस्ड ऑन द लिंकेजेस बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड द स्टेटस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन. यू नो व्हाट इज एन एनोमेरिक कार्बन, कम ऑन, डोंट यू? फॉर इंस्टेंस, लैक्टोज which is formed by a bond between C1 of the beta galactose and C4 of the glucose is known as beta 1 to 4, yani beta 1 to 4. So that's how you name them. Not super important, but you should know how to name them. अब ग्लाइकोसाइड्स की एग्जांपल एग्जाम में ना भर भर के पूछते हैं कि भाई कुछ ग्लाइकोसाइड्स की एग्जांपल बताओ. सो फॉर एग्जांपल ग्लूकोवेनिलिन is a natural substance that imparts vanilla flavor. See its importance? It's a glycoside, and it's a glycoside between, glycoside है क्या? It's a complex mixture. So this particular glycoside is a complex mixture between two compounds. One is D-glucoside and the other one is vanillin. So that's how they make glucovanillin, giving you the vanilla flavor which you use in your cakes and whatnot.
whatnot. Even I was in Germany and I had Coca-Cola, which was vanilla flavored. Wow, that was interesting. Now, cardiac glycosides, digoxin and digitoxin, these are the drugs. They contain A-glycan, which is the non-carbohydrate moiety, steroid, and stimulate muscle contraction in the heart. So that is something also glycoside. Streptomycin is an antibiotic. It's also a glycoside. Ouabain, which inhibits the sodium potassium ADPase, is also a glycoside. Fluorescein products renal damage in experimental animals is also a glycoside. So glycoside is basically a complex of either different hemiacetals or hemiketals, or between the hemiacetal or hemiketal plus a non-carbohydrate moiety. Now, derivatives of monosaccharides. There are several derivatives. मोनोसैकराइड से बहुत चीजें बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल शुगर एसिड्स. अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड्स बनेंगे ना. सो यू प्रोड्यूस एसिड्स फ्रॉम monosaccharides. You can also produce alcohols. So they're produced by the reduction of aldoses or ketoses. So remember, oxidation say carboxylic acid, reduction say alcohols. Then alditols. The monosaccharides on reduction yields polyhydroxy alcohols known as alditols. Ribitol, for example. So that's kind of the same thing, okay? They produce alcohols when they are reduced. Amino sugars. When one or more hydroxyl groups of monosaccharides are replaced by the amino group, you know there are so many alcohol groups, there are so many OH groups in the structure. So for example, this is a glucose, OH group, OH group, OH group. So if these OH groups are replaced by the amino groups, then the product is specifically known as the amino sugars, including glucosamine, galactosamine. So they have now OH gone and amino groups in. और इसी तरह N-acetyl uranic acid, not nani, is a derivative of N-acetyl mannose and pyruvic acid. It's a very important constituent of glycoprotein and glycolipids. The term sialic acid is used to include nana. So these are the same group, okay? Other compounds include certain antibiotics, which are also amino sugars, such as erythromycin. Then their derivative can be deoxy sugars. These are sugars that contain one oxygen less than the routine carbon. Okay, and then there can be ascorbic acid, which is vitamin C. It's a water-soluble vitamin. The structure of which is closely resembling to a monosaccharide is assumed to be a derivative from the monosaccharide. Okay, so भाई बात क्या थी? बात ये थी कि हम monosaccharides पढ़ रहे हैं. Monosaccharide में हमने different terminologies पढ़ी, L, D, ये सारे enantiomer, anomer, पता नहीं क्या क्या. थोड़ा सा dry topic है, I understand, but that's how it is, and but it will make sense, you know. मैं उन्हीं चीज़ों पे focus करता हूँ, उन्हीं points को hit करता हूँ जो clinically आपके लिए relevant है. So enjoy my lectures, and I'm not one of those boring biochemistry professors who, you know, take you to the optical isomerism and the turning of light and the degrees, and I know what is important for you guys. I know what is not important for you, okay? So just follow the lectures and you'll be fine. Next video में हम बात करेंगे disaccharides की.